So entity is working towards innovation, development, or improvement of products or processes or services, or if it is a scalable business model, like you can scale the business from 0 to 100 with a high potential of employment generation or wealth creation, provided that an entity formed by splitting up or reconstruction of an existing business shall not be considered a startup. So basically, the idea is that when you start a business, it has to be a fresh ideation. It cannot be, going in from the perspective of an pre-existing ideation or a pre-existing business that is, that is being restarted in a different form by a different bunch of partners. So what my suggestion is that this is what the law of startup is, that what defines a startup. And my suggestion is that once you start developing a startup, you start developing an ideation, you have to develop the ideation by way of a constructive approach. That approach cannot be like a very haphazard approach कि मुझे ही सब चीज आता है. And once you start doing the way, the way it should be done, that is the most important thing. तो इसमें एक yeah. So coming back to what I was saying, अब जैसे स्टार्टअप के साथ क्या है कि एग्जेम्पशन उसको जो मिल जाता है ना स्टार्टअप को, तो स्टार्टअप के साथ जो एग्जेम्पशन मिलता है वो बहुत लेवल पे एग्जेम्पशन चलता है. दैट वर्क्स लाइक हाउ, एंड व्हेन वी डिसाइड टू when we decide to form a startup, we have to consider a lot of legal issues when it comes to building a startup. I hope, am I audible to everybody? I don't know. सर आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, इट इज लाइव ऑन मेट्रिक्स. अच्छा, बाकी लोग सुन पा रहे हैं? मुझे थोड़ा सा मुझे परेशानी लग रही थी. या एवरी या सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो ये जो डेफिनेशन है स्टार्टअप का, the way it should be carried out, that is something that is not done in an unorganized manner. It has to be a very organized approach, it has to be a very focused approach, and it must be done in consonance with the law. That is to say that all the legal requirements have to be fully complied with. Now there are many issues which I want to put it forth before you, but before I go further, I want to make you understand that when you start a startup, just like the way you do other things in life, there is a struggling phase in your working profile, right? Because things take time to develop. But other than that, the most important point that is to be considered is that you must fight the fear of failure. That is the first essential thing that you need when you want to develop a startup. Because till the time you don't realize that you have to develop a startup, you must have that regular sense of confidence. And to have that regular sense of confidence, you must have belief in the ideation that you wish to carry. That is the most important thing. And another point is that every idea takes time to develop. And once it develops, you have to make sure that that model is a sustainable model. It's an economically viable model.
It's a commercial model that can have an impact on the developing aspiration of your business, as well as the nature of commerce and trade that is required to be carried out in a fair and a proper manner. So the idea is that before you start a business or you have a startup, you must reflect on what is required to build an ideal startup and what are the mistakes that you should not commit while building a startup. That's the most important point. And I must tell you that the first fear is the fear of failing, which I told you. Even if you fail, even if you decide that there is something that is not working out, don't lose out hope. Don't give up. Don't say कि अरे यार अब मेरे से तो हो नहीं रहा, अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है. Every struggle has a gestation period. And trust me, with my own experience, I'm telling you, every struggle has a gestation period, and that gestation period needs to be honored. Secondly, once you decide that you want to start and engage a startup, you should decide what is the nature of engagement you want to register that startup with. You know, like say, for example, you have to identify what is the right nature of business. You know, like say, for example, whether it should be an LLP, that is a limited liable partnership, or an LLC, a limited liability company, or a sole proprietorship or a partnership. That is the most important thing. And when you draft the agreement after registering your company, you must understand that your company must have all the necessary legal documents. Number one is your shareholders agreement or founders agreement. Number two is your articles of association, your memorandum of association when you're registering the company. Now, these are certain important documents which you need to consider because they contain the most important aspect of your company, which is determining a pivotal role regarding the rights and obligations of each founder and shareholder of a startup. What would be their voting rights? What would be their capital contribution? Whether there will be incentives that will be available or not. Say, for example, you want to exit a company, you want to exit a startup because you're not able to financially make it viable, or you are having a dispute with your partner, or maybe you are planning to start something independent of your own. So what would be the exit procedure? And these are some issues that need to be highlighted when it comes to determining that when you should leave a startup or when you want to continue with a startup, and depending on the nature of the issue that is involved. Whatever you do must be written down in words. Because I'll tell you, there's a practical problem. That practical problem is that once, suppose for example, on goodwill and good faith basis, you start a startup. Say, for example, 4 friends pool in their resources, raise a capital of, say, for example, 5 lakh rupees, and tomorrow the startup does not do well, and the friends end up fighting with each other. But the only difference is that once 4 friends pool in together with each other, they are unable to understand that what would be the nature of their relationship that would govern. Having friends who are friends in the generic sense of the term, or having people who are business partners
are two different things. Sometimes business partners turn out to be the best of friends, and the best of friends turn out to be the worst business partners. So as a result of which, the relationship suffers on all the accounts. So it is very important that you must have a written contract, and especially when there is involvement of a third party, an outside party in which you are not a party, or maybe if you are a party, then you have to protect your rights and obligations. And the most important thing is that whenever you're doing a commercial transaction, you must not rely on oral promises. You must not rely on verbal promises. पहले का जमाना था ना कि जिस जबान दे दी काम हो गया. आजकल जिस प्रकार का नेचर बिजनेस का हो गया है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स का हो गया है, वहां जबान की कोई वैल्यू नहीं होती, बिकॉज लॉ वर्क्स ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस. Say for example, if you have a pending recovery of, say for example, ₹1 crore, and you gave it to your business partner minus any agreement, there is no agreement on your part, and minus agreement you give money to a business partner, and when you want to recover it without any agreement, he can flatly deny. Now where does your 1 crore go? Not everybody is a powerful business conglomerate or an entity that has loads of money stacked up behind. So these are important things which you need to consider. And there have been many cases where even close friends have entered into business. Like, say for example, if I decide to manufacture this highlighter, and my close friend is a distributor of highlighters, I manufacture on the promise that he will sell 1,000 carton boxes of highlighters to general market. I invest capital into it. I develop the brightness of the ink. I patent my product. I register my trademark. And after everything done, he says, "नहीं, हमारी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी." Now, where do you go? Your investment goes down the drain. You do not have a viable exit. Your relationship suffers. So it's very important that the nature of relationship, whether commercial or not, must be specifically and explicitly defined. Because in the case of a dispute, the wordings will have word. They will have a sense of meaning. And whatever word has been written down will be effectuated in the execution of the specific performance of the agreement. Then, a lot of points to talk to. So I hope I'm not sounding very jarred or very boring, but I'm just trying to make it simpler and easy for all of you to understand that what are the precautions you need to take when it comes to deciding that the way you carry out your businesses. Another point I'd like to make is that which is the most important point, is to have a good team of legal support and not be a legal counsel yourself. Because see, the nature of divine nature is that it has carved out some people for everything and some people for specifically one thing. So either you do a business, or you become a lawyer, or you become an entrepreneur trying to become a lawyer. So both can't work. Either you're a lawyer or you're an entrepreneur. And to not have a wrong sense of legal advice, it is very important that you must have the right sense of legal guidance when it comes to determining the nature of application of laws to evaluate the nature of your startup. So for that, the most important point is that you must have
a proper legal entity, as I mentioned before, whether it's a sole proprietorship or a partnership under the Partnership Act, that say, for example, 4 or 5 friends together pool in together, like a lot of IT people do, that they finish their IITs, they finish their IIMs, and they pool together and they start an entrepreneur a business, a startup, basically. Like, say, for example, doing some stuff on the information technology sector, or maybe trying to have a food delivery app like Zomato, or say, for example, like a car delivery app. You are able to select a range of cars from one portal. You don't have the time to take a test drive, so you can go for a test drive on that, book your car, and you must decide that whichever, or a partnership or a limited liability partnership, LLP, or in general a partnership. Because see, when you try to build a structure that defines the nature of your startup, every structure has its own advantages and disadvantages. You will have the benefit of receiving something in law, as well as you'll have the benefit of not receiving something in law. But generally, on a more I would say, on a more important note, the law appreciates and respects a registered document. Even if two friends enter into a partnership but the document is not registered, there is no registration of that agreement which has been carved out by the two friends, then the law will not be able to enforce any specific rights and obligations when it comes to solving a dispute between the two partners subsequently post the formation of the startup. And therefore, if you take an uninformed decision, you pay more tax, you are personally liable for the debts, karja, that your startup firm accumulates over a period of time. The investment is not turning the clock. There is no 360-degree turnaround, that the investment that is accrued to you by virtue of your own investment in your startup, that starts flowing in, that starts coming in. And you end up spending more and more time doing false and frivolous and foolish documentation in registration, in filing, which is not required. So therefore, it is most important that you must have the right module, the right registration, the right process to register your startup. Because once you register your startup in an appropriate way, even if you want to pitch yourself in future to a venture capitalist, or you want to pitch yourself to an investor, or even seeking protection vis-a-vis the role of the creditors, you will have a safe and a solid shield with you. That is the most important thing. And say, for example, if you choose general partnership and subsequently the partnership evolves into a bigger company, and then the company fails and the debt structure rises, then all the partners are equally liable. Then there will be proceedings against them in the SARFAESI Act. Their property will be seized. Bad publicity, bad name, all of that will be covered in these episodes. And therefore, in that way, it's important that when you draft your agreement, the words of the contract must be effectively drafted.
There must be clarity of language. There must be specification of language. And another point would be that once you register the product, once you register your company, your brand name, you have to register the intellectual property of your company. Like, say, for example, I'll give you a small example. Like, say, for example, this is a Bisleri bottle. This is trademark of Bisleri. All of us, I don't know how many of you have seen, but we have seen this brand for at least 30 years from the existence of my own lifetime. And with a slogan here. Now, this is a trade. And it defines that what is going to be the design of the mark. It defines what is going to be the color code of the mark, what is going to be the sub tag of the mark, subline of the mark beyond the brand. So once this trademark is registered under a trademark class before the trademark registry, the world knows that it's your brand and they cannot challenge it. And anybody who tries to appropriate your brand can face legal proceedings in a court of law. Criminal proceedings, legal proceedings, trademark proceedings, compensation, damage, whatsoever, infringement, stay, injunction, all that stuff. So it's very important that to register your mark, the right brand, the right word, the right class, the right design, the right color coding, the right there should not be phonetic similarity with any other brand. All of that must be considered. Then let me come to the next point. That once you start a startup and the agreement that you build, you must have a non-compete clause in the founder's agreement or any other agreement which is entered into a running course in the ordinary course of the business. Once you start a startup, that there is that once, in case if the partners decide to split the startup partnership or liquidate the company eventually, for a period of some time, any other partner will not engage in a similar business that affects the brand name. Because the essence is that the brand name which has started the startup is a unique idea. The ideation behind the formation of a startup is a unique concept for which all these people have come together and they have come on a common platform to develop a trademark or a brand which needs to go in that line, in that class of good, which has to be used for consumers, sold between the consumers and used for consumption in the market. So therefore, this is a separate, unique idea which cannot be misused or used by anybody else. That is the important point. Once, in case if the partnership decides to end or decides to break or whatever be the reason behind it. So this is important. And there are many instances which can happen. You know what happened with the Oyo rooms? Flipkart, you know what happened? There were clashes between Binny Bansal and Sachin Bansal. A lot of other things happened. Countless examples are there. Then another point which I want to tell you is that once you build a partnership agreement or an agreement between the concerned parties, it's important
that whatever stake you take in the business, like say for example, recently Mukesh Ambani has offloaded 9% of its stake to Facebook, and that is the largest investment in a tech startup in the coming time. Now, Jio provides a huge platform to Facebook in India. Apart from the fact that Facebook is a huge platform in its own self in India. But then the question is, once two big companies come, how do you see and complement a joint venture in terms of growth, in terms of nation building, in terms of understanding that how a startup should function and develop? Of course, the nature of the scale of the companies is so huge that you cannot call them a startup, but it is definitely an inspiration to many of the small young startups who want to work in a particular line of field. So it is important that once you're negotiating a deal, like say for example, if I'm a lawyer, I want to join an international law firm in London or in New York, and I want to rise as a big partner, I want to make money, I want to have a good life, I want to have a comfortable life, having the best luxuries of the world. So, but when I'm deciding to join a firm, how do I secure my own stake? कि मैं जो काम करने जा रहा हूं उससे मुझे कितना फायदा होगा और किस नेचर का फायदा होगा, उसको मैं सिक्योर कैसे करूं? तो उसके लिए मैं नेगोशिएट करता हूं. I talk that this is what I want. The company says, no, we can give you this only. I said, no, sorry, I cannot work with this. So there are many other issues that you have to consider, and therefore it is important that how do you distribute your sweat equity? What is the equity you want to take when it comes to deciding that you want to start a company and you want to take an equity of that? And if not equity, then how do you see yourself getting some kind of a financial closure, a remuneration, a financial empowerment that is going to determine the nature of your lifestyle? That is the most important point. And therefore, it's important that you must have the right negotiating skills. You must have the right negotiating approach to determine what is going to be the future of your own nature of investment. That is the most important point. Then another point is, which is the most important point, which all of you as young startups, as entrepreneurs, as well-wishers of each other must know, is that once you develop an agreement to engage in a startup, it is very important and very pertinent to have a force majeure clause. For those who don't understand, basically it means is that you need to secure your business from events which are not in your control. Like say for example, Corona. Did 3 months back anybody anticipate that the world economy will come to a standstill because of one virus that originated from one country? Nobody thought. The nature of commercial transaction is so diverse and so wide that the world was still trading.
The world in some respects is still trading. Some prohibited goods apart, essential goods are still being created. Like, say, for example, China is sending PPE kits and masks to America, to other countries. India sent hydroxychloroquine to America. So trade is still going on. But whenever there is a trade for recovery of payments, like for example, I'll give you an example. Now, suppose if the government of India wants to purchase 1,000 quintals of rice, okay, from a group of agriculturists, and it places an order. Sorry, a group of a rice manufacturing company. Many of them are there. It places an order. These companies have a supply chain with all the agriculturists who are working on the ground. I think, am I audible? Because there are some messages are coming that I am not audible. Rohit, is everybody able to hear me? Now, say for example, now these companies place an order with kisan bodies to supply them rice on wholesale. बारिश होती है और बारिश में चावल की फसल खराब हो गई, और चावल की फसल जब खराब हुई, ओलावृष्टि हो गई. अभी आपको पता है कि बारिश हो रही है तो ओलावृष्टि भी हो रही है. और ओलावृष्टि के बाद जो धान की खेती होती है, बिकॉज मैं खुद भी गांव बहुत घूमता हूं तो मुझे पता है, जो धान की खेती होती है तो उसमें आप चावल का पैदाइश ही नहीं हो पाया, तो सप्लाई चेन अफेक्ट हो गया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मोरिटोरियम साइन किया था कि अगर आप इतना नहीं देंगे तो आपको डैमेज देना पड़ेगा. अगर आप इतने टाइम तक आप इतना क्विंटल सप्लाई नहीं करते हैं तो आपको इतना डैमेज भरना पड़ेगा. तो हम तो ठहरे हेल्पलेस. अब हम कहां जाएं? Where do we go now? Therefore, I would then seek to invoke the force majeure clause under the Contract Act, that this is a situation which is beyond my control. ये मेरे सोच के बाहर है. I cannot undertake a business discussion because I am incapable of taking a business discussion because of the conditions that were imposed upon me, because of the lack, because of natural issues. Rain came, destroyed the crops, ओलावृष्टि हुई, सामान की पैदाइशी नहीं हुई, किसानों ने हमको गेहूं धान नहीं भेजा, हम उसको तराश नहीं पाए, चावल नहीं बन पाया, और हम आपको टाइमली क्विंटल सप्लाई नहीं कर पाए. तो जब ये फोर्स मेजोर का क्लॉज आपके पास होता है, तब आपके पास एक सेफ्टी नेट होता है. देयर इज अ सेफ्टी वॉल्व which protects you from illegal lawsuits, from irrational actions on part of the other party which is seeking to enforce a criminal or a civil proceeding against you for a delay in delivery of the concerned good. So it is very important. And once there is a force majeure clause, even in the ordinary course of business, you can continue to perform the functions of your business as well as your company, as well as the terms of the agreement, without any tension, without being liable for such non-performance, and maybe in worst cases where there are chances that the agreement might be terminated completely. मतलब जब मेरा अग्रीमेंट ही टूट जाएगा तो हम करेंगे क्या फिर? And therefore, to defend yourself, there is a ground in law called frustration of contract.
फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली क्या कहा जाता है कि जो स्थिति मेरे पास नहीं है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट मेरा उसी कारण टूट रहा है, या कोई और भी स्थिति है, देयर आर लॉट ऑफ ग्राउंड्स. आई डोंट हैव द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विथ मी, सो आई कांट टेल यू राइट नाउ, बिकॉज मेरी जनरली आदत है डिटेल में जाके बोलने की, मैं ऐसे बोलता नहीं हूं. यू कैन चेक इट अप ऑन गूगल ऑल्सो सब्सिक्वेंटली, और मे बी कंसल्ट अ लॉयर. तो ये इंपॉर्टेंट है. अच्छा, आप जो कंपनी बनाते हैं, उस कंपनी में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो आपके नीचे काम करते हैं, जो लोग जो आपके साथ काम करते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन होता है, ट्रेड यूनियन के इश्यूज क्यों आते हैं? क्योंकि लेबर लॉस को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, मैनेजमेंट के साथ इशू होता है, वर्किंग क्लास और व्हाइट कॉलर क्लास का एक इशू होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं. तो इसलिए ये बहुत जरूरी है. जैसे सपोज करिए कि आप एक कंपनी चला रहे हैं, वहां पे आपकी कंपनी में यू आर एम्प्लॉइंग अराउंड 300 पीपल, आउट ऑफ विच 100 पीपल आर विमेन. अब जो मटर्निटी लीव आपको देना होगा, जैसे कोई वर्कर आपकी प्रेग्नेंट है, या कुछ फैमिली इश्यूज हैं, या जो भी है, तो क्या एम्प्लॉय बेनिफिट होगा, किस तरीके का एम्प्लॉय बेनिफिट होगा? कैन यू फॉलो हायर एंड फायर पॉलिसी, कि जब चाहे रख लिया, जब चाहे हटा दिया? और किसी भी एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होना चाहिए, उसके काम करने का तरीका कंपनी के बेनिफिट में कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स को लीक करना या उसको बाहर बेचना, ये इस तरह के बड़े सारे इश्यूज आते हैं इसमें. तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया अगर मेरा एम्प्लॉय है और मेरे साथ काम कर रहा है, तो मैं उसको किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे मैं उसको गवर्न करूंगा. उसका जो बिजनेस रिलेशनशिप है, क्योंकि आप तो कमर्शियल रिलेशनशिप हो गया ये, दैट विल बी दैट ऑफ एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. तो आप उसको सैलरी देंगे, तनख्वाह देंगे आप, तो आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए कि क्या नेचर आपका होना चाहिए एक एम्प्लॉय के साथ. ये बहुत जरूरी है. और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे है, कि कहीं उसका आपके साथ जो रिश्ता है, कहीं वो उसके बाकी कलीग्स के बीच में लीक नहीं हो जाए कि आपका रिश्ता खराब हो जाए, या उसका रिश्ता उनके साथ खराब हो जाए, या बाकी कलीग्स को लगे कि ये अनफेयरली प्लेस्ड है हम लोग के ऊपर. तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं. एंड another point which I want to say is that जब आप एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, when you draft a commercial contract, like say for example, जब आप एक माल सप्लाई करने के लिए आप एक एलसी खुलवाते हो, करेक्ट? अगर आपके एलसी में डिस्प्यूट हो गया, सपोज करिए कि आपने एक स्पेसिफिकेशन का माल मंगाया, या आपने एक स्पेसिफिकेशन का माल सप्लाई किया, ठीक है, +10 -10 चलता है. लेकिन अगर +25 -25 हो जाएगा, तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू अ कमर्शियल डिस्प्यूट, और आप कोर्ट ऑफ लॉ में घसीटा जाएंगे. तो इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि जब आप एक अग्रीमेंट बनाते हैं, जब आप एक कंपनी के साथ अग्रीमेंट करते हैं, इंटर कंपनी ऑल्सो, इंट्रा कंपनी ऑल्सो, मतलब कंपनी के अंदर भी, कंपनी के बाहर भी, तो आपका जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज है, कि अगर पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हुआ, या इस एक्स कंपनी का वाई कंपनी के साथ झगड़ा हुआ, तो बिफोर वी अप्रोच एनी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम, वी मस्ट try to mediate and resolve the dispute in this and this way. In case if the dispute is not resolved in this and this way, then we will seek the recourse of an arbitration or a court proceeding. क्योंकि अगर शब्दों की सूची सही नहीं है, if the right words are not used, if the words are not clear, and they are not specifically defined, they are ambiguous in nature, then this can create a lot of benefit for a third party who wants the two of you to fight. और जब लैक ऑफ टर्मिनोलॉजी, लैक ऑफ क्लैरिटी खुद के अग्रीमेंट्स में रहेगा, तो अपने खुद के राइट्स को एनफोर्स करने में आपको परेशानी होगी.
और इसी के साथ एक और चीज जुड़ती है कि जब आप एक अग्रीमेंट बनाते हो तो उसमें आपका जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज है उसमें आर्बिट्रेशन का क्लॉज, या इनकेस कोई डिस्प्यूट होता है तो कौन से जगह का कोर्ट का जुरिस्डिक्शन उस अग्रीमेंट के अनुसार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो स्पेसिफिकली डिफाइंड होना चाहिए। अब जैसे बिजनेस हो रहा है पटना में लेकिन अग्रीमेंट का क्लॉज दिया हुआ है मुंबई में कि द डिस्प्यूट आउट ऑफ दिस कमर्शियल ट्रांजैक्शन विल बी सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स ऑफ मुंबई। तो अग्रीमेंट हो रहा है पटना में, ट्रांजैक्शन हो रहा है पटना में, जुरिस्डिक्शन बन गया मुंबई के कोर्ट का। कैसे पॉसिबल है? इफ द कंपनी रजिस्टर्ड इन पटना or registered in Delhi or in Kolkata, can the courts of Mumbai have jurisdiction on these companies when the transaction has happened at Calcutta or at Patna or at Delhi? So that is something that needs to be looked into. So your dispute resolution must be very specific and must be clear cut so that you can avoid litigation court proceedings. हालांकि वो इवेंचुअली तो होता ही है, but फिर भी as a lawyer it is my duty to tell you what is true and what is important. Then another thing is that you must take care of your tax issues. File GST timely. You must know that how your tax is to be filed. What are the exemptions that you like to get? And after you get all these exemptions, how well you are placed to give proper revenue to the government of India. That is another point. Also, you must understand as a startup, you are entitled to government benefits under the Make in India scheme. So you must know that how you are able to get all these exemptions when it comes to deciding that what a government of India scheme should be and how it should favor you and how you should get your entire, the response that you should get regarding the tax exemptions that you must have, or you must have that level of the participation of the government is, say for example, giving subsidy or incentive to that sector in which you are trying to raise your startup. That is important, and therefore it is important to register with the government and seek the benefits that you wish to give. Another point is that whatever startup you must create, see, today is the age of social media. And since it is the age of social media, it is important that your product must be placed very wisely in the market. Like say, for example, this bottle of Bisleri, which I'm showing you here, can I place in the market as white ink when it is a bottle of water? I cannot. So in the e-commerce procedure, when you list your product in an e-commerce portal, say for example Amazon or Flipkart or any other portal, there's so many of them these days, you must place your product wisely in the category and the nature on which you want to sell your product. I cannot sell a bottle of pickle as a bottle of sauce. Pickle is one thing, sauce is another thing altogether. So that's a very important thing which I need to consider. And there must be a proper privacy policy. There must be a return policy that in case if you want, if a customer wants to return the product, in how many days should he return the product? And if he's using the product, what are the privacy considerations which are to govern the usage of that particular product? And whatever terms and conditions are drafted,
they must be properly drafted. There must be specification of the words used in the drafting of all these terms and conditions. It cannot be arbitrarily done. It cannot be just randomly done that ये शब्द डाल दो, ये लाइन डाल दो, ये एक्सप्रेशन डाल दो, ऐसे नहीं होता. तो ये प्रॉपर जो है कंप्लीटली सारा सिस्टम जो है इसका सेट होना चाहिए. एंड every commerce portal on which you try to market your product requires properly disclosure of its terms of use, privacy policy, as well as a disclaimer under the Information Technology Act 2000 and other rules and other provisions of the law. So it is important that you must specify the nature of your product properly on an e-commerce portal. So that you know that what you want to say and what your product should say and what the customer hears. There has to be a sync in all the three. There cannot be something that you say one thing, the customer takes it something else, and a lot of other issues. So you have to take steps to save yourself from all the unnecessary, unwanted legal troubles. Another important point is that you must avoid wrong marketing tactics. Which is that you must understand, when you sell a product, you have to sell what the product is meant to be. You cannot say that this is an air conditioner remote, but it also works like a video game console. It can double up like a video game console like this. You can't play like this. So it is important that whenever you market your product, your marketing should not be misleading. If you mislead your customers, you erode your brand value, the good faith that potentially you are trying to generate in a potential place of future or present or existing or accruing customers or expanding customers. And in case if you're trying to act smart, then I must tell you one thing, the law is smarter than you, because your action will entail liability in law for misleading customers, because then you can be charged under the Penal Code, under the Information Technology Act, under provisions of the IPR Act, Trademark Rules and Act, and copyright, and many other things. Like even for this Bisleri, there are many similar Bisleris which are lurking in the market. Billuri, Bilkuri. I saw a bottle called Billuri. वो ऐसे ही था, वो ग्रे था और ये भी सेम था, वो बिल्लूरी लिखा हुआ था उस पे. वो तो ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट का केस हो गया ना प्रॉपर उसका. तो ऐसा जो भी आप ब्रांड बनाते हैं, आपको कस्टमर को मिसलीड नहीं करना है, because that will attract legal liability. Then another thing, last 1-2 points I want to tell you, and then I want to sum it up and maybe take up questions from you, is that when you raise a startup, when you negotiate for your startups, like say for example, Sequoia is one venture capitalist. They want to fund maybe, say for example, a startup that works in healthcare, like supposing developing COVID related material like PPE kits or masks or sanitizer or whatsoever. Now, once you try to raise the stock value of your startup, you have to ensure
that before you pitch in yourself to any other angel investor or to a venture capitalist or to even family and friends, you must issue your stocks in compliance with specific disclosure and other filing requirements under the securities law and company procedure law. PAN number, tax number, all that stuff which is there before the ROC and all that stuff. Because if you don't do it, and once the government of India decides to launch a prosecution against you and your company by cancelling your DIN number or by cancelling your registration number as a company, then you're doomed. So it is very important that you must, even though how much time taking it is, how much exhausting and frustrating it is, you must take proper legal help to file all the relevant documents regarding securities and company law, the procedures that are required to start and maybe show your balance sheet with your CA and all that stuff. And before the ROC, everything should be organized in a proper and a more effective way that you do. And therefore, once all these filings are done, these documentations are done, you will be secured in the law to do proper effective business. And once you are able to secure yourself that you have all the requisite filings, your tax is timely paid, the agreements are clearly drafted, legal liabilities issues are clearly drafted, force majeure clause is clearly drafted, there is an arbitration agreement, there is a jurisdiction clause that in case of dispute, the dispute will be subjected to whose courts and where jurisdiction of which court will lie. When everything is clear, then you can do business with peace of mind, because this part of your troubles will be taken care of. And lastly, in case if you decide to quit your business, how do you want to quit your business? When you resign from partnership or when you want to wind up your company, then you have to go in for insolvency proceedings. Or say, for example, your company has turned out to be a bankrupt company. So there are insolvency proceedings under the law. The NCLT takes care of it, as well as you have an appeal court in NCLAT, National Company Law Appellate Tribunal, and then the Supreme Court. So you have multiple forums to declare you bankrupt or maybe uphold, and then there is an IRP will be appointed, an interim resolution professional who will decide the fate of your company and everything, all of that. And then you have to pay off your debtors also. But for that, you need to have money. So before you head into bankruptcy, you have to secure your assets, stock up your revenues, stock up your savings, so that you are able to take care of your legal issues. That is something that cannot be overridden. And then it's important that you must have, because if you don't address all the issues in a timely way, if you delay कि हाँ चलो ठीक है कर लेंगे हो जाएगा देख लेंगे, then it is going to create a massive problem in your own personal and professional life. So इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप लिमिटेशन पीरियड, बिकॉज लॉ में हर लीगल एक्शन लेने का एक टाइमलाइन होता है कि अगर मुझे सूट फाइल करना है, अगर मुझे रिकवरी करनी है पैसों की, तो मुझे इतने टाइमलाइन में ही, लास्ट इवेंट से लेके अभी तक इतने टाइमलाइन में मुझे सूट फाइल करना है. अगर मैं इस टाइमलाइन के बियॉन्ड करूंगा तो मैं लीगली मैं बार्ड हो जाऊंगा. आई विल बी बार्ड बाय लिमिटेशन ऑफ लॉ.
and the law of limitation both. So that's why it's very important that you must have a clear cut head and you must have a clear cut idea that how you want to go about it. You want to understand that what is going to be a big decision that you've taken in life to start a startup, which is basically a younger version of a company. And the only way to start a startup is to engage a lawyer who would take up informed decisions on your behalf after a thorough and diligent research of the laws concerned. That's very important. Because जब तक कानून नहीं जानिएगा तो फिर काम नहीं कर पाइएगा, और कोई काम कानून के बिना होता नहीं है. ये बहुत जरूरी है. And once you engage a good legal team, you will also be in a position to prevent yourself from future downfall. Because the job of the lawyer is to intimate you in advance that if you take up a decision like this is going to be of consequence. And this is how you will end up suffering and damaging your business. और आखिरी चीज है जो बहुत जरूरी है कि किसी भी स्टार्टअप को बहुत सारे लॉज का कंप्लायंस करना पड़ता है. सिक्योरिटीज लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, कंपनी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, रियल एस्टेट लॉज, टैक्स लॉज, म्यूनिसिपैलिटी लॉज. तो ये काम नॉन लीगल आदमी कर ही नहीं सकता, वो पागल हो जाएगा. मुझे कहा मैं कहां फंस गया यार, मैं तो स्टार्टअप एक आइडिया को लेके चला था. एंड वेयर एम आई टुडे, यू नो, आई थॉट समथिंग एल्स एंड समथिंग एल्स इज हैपनिंग. अब आपको डिपार्टमेंट से नोटिस आ रहा है तो आपको कुछ आ रहा है, आपको यहाँ पे कोई क्लेम भरना है. और अपने जो भी आप कंपनी बनाते हैं, जैसे आप कंपनी सपोज करिए कि आप एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप बना के आप उसको बेचना चाहते हैं एट अ हायर प्राइस, तो आपको वैसे भी अपनी कंपनी का ड्यू डिलिजेंस तो करना पड़ेगा ना. कोई कंपनी ऐसे थोड़ी खरीद लेगा. और अगर आपके ड्यू डिलिजेंस में जो अदर पोटेंशियल बायर देखेगा, उसको 10 चीजें मिलेंगी जो आपको नहीं पता है या आपके आलसीपना से गड़बड़ा गई, तब आपकी क्या छवि जाएगी उसमें. Where do you go from there? Your branding goes down like this. So it is important that you must have a good and a very practical, prudent legal team, chartered accountants team, and the right team of right experienced advisors to guide you and mentor you. That helps you to develop your startup. Because every startup has a specialization of its own. And it is important that every startup must be catered as per the laws of the land as to what would be the conditions that would govern the nature of that particular startup. And most importantly, it must give a clear-cut bird's eye view in the beginning as to what would be when it comes to determining the way a startup should proceed. And that's all. Thank you so much, friends. It was a pleasure addressing all of you. I hope I was able to make my point very clearly and try to show some light on you to solve your legal dilemmas and to solve your issues regarding your companies, your startups, your other issues. I am open to questions now. You can ask me whatever you want to ask. Rohit. आप में से किसी के पास क्वेश्चन है तो they can ask on chats. Okay, so you can start. Some questions are coming here. Yeah, so I will just ask them and repeat that question. Okay, so first question is from Manish. Sir, what are the things I should take care of so that my startup doesn't fail? मनीष का क्वेश्चन है कि क्या थिंग्स वो टेक केयर करेंगे जिससे है ना उनका स्टार्टअप फेल नहीं. देखो मनीष, आई टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली. लाइफ में किसी चीज की गारंटी नहीं होती. कोई चीज सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, ये वक्त और आपकी मेहनत डिसाइड करता है. सबसे बेसिक चीज है. और थर्ड है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस.
कोई भी काम एक दिन में नहीं होता. I always tell my people, and whenever I also go through my own challenging times, I always tell myself Rome was not built in a day. तो इसीलिए सबसे पहला है कि खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद में सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए. दूसरा है कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उसमें आपको भरोसा होना चाहिए कि मैं जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं इसको मैंने इंटेंसिव मार्केट रिसर्च के बाद मैंने तैयार किया कि मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत है, या जो एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटिव है वो बहुत चीप, वो बहुत एक्सपेंसिव है. मैं थोड़ा सा एक चीपर बट बहुत कॉस्ट इफेक्टिव अच्छा ऑल इनकम्पासिंग मॉडल आना चाहता हूं. अब जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं. एक जमाने में पावर विंडो बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी गाड़ियों में. मेरे बहुत सारे दोस्त लोग अग्री कर रहे होंगे जो 80s 90s में बड़े हुए हैं. दे विल अग्री विथ मी दैट पावर विंडो वाज अ वेरी बिग थिंग. आज ये आलम है कि जो प्लास्टिक का जो डैशबोर्ड होता है उस पे भी जो पैनल आता है, पैनल में भी स्क्रीन फिटेड है, और स्क्रीन करके आप एंड दबा सकते हैं, आप उसमें गाना सुन सकते हैं, आप उसमें एफएम दबा सकते हैं, सब चीज दबा सकते हैं. ये लग्जरी हुआ करती थी एक समय. तो मार्केट नेसेसिटी क्या हुआ कि कंपनीज ने रियलाइज किया कि जनरेशन चेंज आ रहा है इंडिया में, लोगों की एस्पिरेशन बढ़ गई है, तो हमको अपने प्रोडक्ट को ऐसा लॉन्च करना पड़ेगा कि हमको वैसे कस्टमर रेंज को टारगेट करना पड़ेगा. तो इसीलिए प्रोडक्ट में भरोसा होना बहुत जरूरी है. दूसरा, एक अच्छी लीगल टीम होनी चाहिए आपके साथ जो आपका लॉस का कंप्लायंस देखे, आपका आरओसी की फाइलिंग्स देखे, लीगल एंड सीए की टीम आपके टैक्स रिटर्न्स को प्रॉपर्ली फाइल करे, आपको राइट एडवाइस दे इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, इन केस ऑफ डिफॉल्ट विद गवर्नमेंट एजेंसीज और विद बैंक्स. ये बहुत जरूरी है. और बाकी आपकी मेहनत है, जो जितनी मेहनत करेगा वक्त उसको वैसे ही खड़ा करेगा. या नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन योगिता का है. योगिता पूछ रही है कि अगर उनका स्टार्टअप फेल होता है तो बैंकरप्सी कैसे फाइल करें. नहीं, तो अगर स्टार्टअप फेल होता है तो फिर स्टार्टअप देखिए उसको देखना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू गिव proceedings in for winding up of your startup, but for that it has to acquire that big group that you are able to give winding up proceed, that you are able to file winding up proceeding for your startup. आपका टर्नओवर भी तो उतना होना चाहिए. और वैसे भी अगर आप कंपनी बंद करते हो, स्टार्टअप क्या बेसिकली कंपनी है, तो अगर आपको कंपनी बंद करना है तो आपको वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग फाइल करना पड़ेगा एनसीएलटी कोर्ट में, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. And then the court will take its own proceedings and appoint an interim resolution professional and all that stuff, and that's how the law process will go on. वो तो separate चीज है, वो second legal हो जाता है वो. जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कुणाल जी का. कुणाल जी had asked कि क्या कहते हैं कि QSR रेस्टोरेंट खोलने में, वाओ मोमो टाइप QSR रेस्टोरेंट खोलने में किस टाइप की लीगल टीम का आना जरूरत पड़ेगा. What type of legal team we need? देखिए, what type of legal team की जरूरत नहीं है. आपको अच्छे लॉ फर्म या लॉयर की जरूरत है जो आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन देखे, आपके अग्रीमेंट्स को तैयार करे. यू नीड अ कॉर्पोरेट लॉयर who can draft your agreements, who can draft your your dispute resolution clause, your force majeure clause, कि अगर आप फूड मटेरियल प्रोक्योर करते हो तो आपको कैसे करना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये सब का आपका एक लॉयर करेगा जिसको आप हायर करिए. जी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रमेश पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि आपके व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड इन योर ओन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी. Well, there are challenges every day. There are in any profession, be it business, be it law, be it politics, be it other professions, medicine, there are challenges everywhere. How you surmount your challenges is your own call. And how well you are able to take these challenges head on is something that you have to decide on your own.
So what my struggle is will not be your struggle. What your struggle is will not be my struggle. Like every lawyer has to find his own space in the legal profession, and for that you have to work hard. Similarly, every startup has to find its own space in the startup sector. So they have to pitch their product appropriately. And once you pitch your product appropriately, then things will sort out. You have to stand by your product at the end of the day. Yeah. Yeah. So basically बहुत लोग है ना आउट ऑफ टॉपिक भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट मैं फिर से कहूंगा कि है ना लीगल पे है ये पूरा, तो आप लीगल पे पूछिए, और सर के है ना पर्सनल लाइफ पे भी पूछ सकते हैं, लाइक हिज जर्नी एंड ऑल। बट इसमें फंड्स वगैरह का भी बहुत सारा क्वेश्चन है, उसके अलग सेशंस होंगे कल, मे बी शशांक कुमार सर के साथ सेशंस है, सो यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन इन दैट। ओके, सो आप सिर्फ लीगल के क्वेश्चन पूछिए, और अगर सर से है ना कोई आपको क्या कहते हैं उनकी जर्नी के बारे में या उनके सजेशन चाहिए तो यू कैन आस्क। ओके, एंड वन क्वेश्चन इज फ्रॉम Okay, I have a question from, sorry Rohit, I'm interrupting you. There are a lot of other questions which I am also getting. There is a question from Rhythm Sehgal, that she wants to do a startup relating to tech. See, Rhythm, understand one thing. In any startup, there will be competitors. Okay? And, you will have your own issues. But see, how important point is that how do you distinguish your product from others? For that, you need to do market research. You need to understand the analytics of your product. You need to understand the demand of the consumer. You need to understand that what exactly the consumer is looking for, and then you create a product. So this is something that you will have to do on your own, and you need to have a good legal team to guide you when it comes to forming your company, when it comes to deciding your trademark, when it comes to filing your trademark before the registrar of trademarks, all that stuff. So you make your own concept and then you market it accordingly. Then another question is, okay, I'm getting barrage of questions here. Wait a minute. There is one. Okay, Rohit, you decide to take the questions. ओके, बेटर रहेगा कि है ना मैं कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ये लगभग 1000-2000 बच्चों को जो, And in case if you want a lawyer, you can contact me, no problem. I'll be more than happy to help you. और सर का मैं सर के लिए का है ना मैं नंबर शेयर कर दूंगा, और यू कैन कांटेक्ट हिम, और जो भी आपका सजेशन चाहिए। I hope the session was informative. I was very nervous. Was it informative? Yeah. Rohit? सो बेसिकली है ना मैं कुछ क्वेश्चन है ना पूछना चाहता हूँ जो क्या कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से आते हैं मुझे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन रहता है, अगर मान के चलिए कि है ना मैं स्टार्टअप करता हूँ, इफ आई एम डूइंग अ स्टार्टअप, ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स और व्हाट टाइप ऑफ लीगल प्रोसीजर आई हैव टू टेक कि मैं अपने पार्टनर्स के साथ, बहुत सारे चीज में क्या होता है, पार्टनर्स दे पार्टनर विद मी एंड वर्क विद मी फॉर 3 months 4 months, मैंने उनको शेयर दे दिया, लेकिन फिर वो होता है कि दे जस्ट क्विट, और हम लोग उस टाइम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर वी कैन टू अवॉइड दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन? आई डिडंट हियर यार, रिपीट इट वंस, सुन नहीं पाया। कैन आई रिपीट? हाँ प्लीज गो अहेड। मैं ये पूछ रहा हूँ कि है ना बहुत सारे केस में क्या होता है कि दो लोग पार्टनरशिप पे है ना कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, एंड वन पार्टनर होता है कि 3 months और 6 months के बाद वो क्विट कर देता है, लेकिन पार्टनरशिप डील पे जो भी शेयर्स डिवाइड हो जाते हैं, शेयर फिक्स हो जाते हैं, तो व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स वी कैन, व्हाट टाइप ऑफ प्रिकॉशन वी कैन। मैंने क्या बोला था अभी? मैं जो एक प्रेजेंटेशन दे रहा था, डिसीजन टू क्विट, मैंने क्या बोला था अभी? when you decide to have a partnership,
At the time of partnership, the sweat equity of the partnership must be effectively decided. That means the rights and obligations of each partner with regards to, say, for example, I gave the example of Facebook and Jio. 9% ऑफलोड हुआ जियो का फेसबुक में, ठीक है. Now they decided their rights and obligations. Now suppose if a partner decides to exit the deal also, तो वो जो स्वेट इक्विटी उस पार्टनर की होती है, जो एग्जिटिंग क्लॉज है, वो अग्रीमेंट के टाइम में ही उसमें ड्राफ्ट हो जाएगा कि इन केस इफ द पार्टनर डिसाइड्स टू एग्जिट एंड ही वांट्स टू गिव अवे द पार्ट, सो वो तो अपने उसमें देगा क्या करना है क्या नहीं करना है उसको. And he has to either return back the partnership or he has to, maybe he gives a resignation letter and then start an NCLT proceeding against him or whatsoever. तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी स्ट्रक्चर में क्या है. वो तो हर कंपनी का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं हो सकता ना, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है कंपनीज का. कभी कभी कोई 40 में 50 बोलता है कि मैं किसी को अगर आप 10% ऑफ स्टेक देते हो, वो बोलता है कि मुझे 40% दो. किसी को 60% तो बोलता है मुझे 70% दो. तो ये तो केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है. यू कैन नॉट एक्चुअली प्री जज एंड डिपेंड्स ऑन व्हाट वर्डिंग द अग्रीमेंट हैज बीन ड्राफ्टेड ऑन. अग्रीमेंट कैसे ड्राफ्ट हुआ है, तो ये सब जब ड्राफ्टिंग होती है तो एग्जिट क्लॉज जो है उसमें ये स्पेसिफाइड होना चाहिए दैट इन केस if either of the partner decides to quit the firm or quit the partnership business or quit the startup, then this will be the process. ठीक है. रोहित, रोहित. Yeah, okay. So basically at last खत्म करने से पहले बहुत कुछ लोगों का क्वेश्चन तो हो ही गया है, लाइक ऑल ऑफ देम आर कवर्ड देयर क्वेश्चन. और किसी को लीगल एडवाइस की या आपको क्या कहते हैं लॉयर की जरूरत है तो मैं आई विल शेयर जस्ट व्हाट्सएप मी. आई विल शेयर सर के मैं पीए का है ना नंबर शेयर कर दूंगा, यू कैन कांटेक्ट हिम. और यहाँ पे मनीष ने एक क्वेश्चन पूछा है, जस्ट अ सेकंड. क्वेश्चन इज, sir, what if my startup idea is similar to someone else's idea in other part of the works? Will I have to change my idea or can I go ahead? इनका क्वेश्चन है कि है ना, अगर किसी का स्टार्टअप आइडिया इनके आइडिया जैसा रहेगा तो वो इस स्टार्टअप को आगे ले जा सकते हैं कि कुछ और आइडिया को सिलेक्ट करें. मनीष ने पूछा. सी आई टेल यू समथिंग मनीष जी, आप आराम से जो आपका आइडिया है वो आपका ही आइडिया रहेगा, प्रोवाइडेड जब आप उस आइडिया को रजिस्टर करने जाएंगे तो आपको ट्रेडमार्क का नेम चेंज करना पड़ेगा. एक फील्ड में मेनी कॉम्पिटिटर्स कैन बी देयर. अगर 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 मर्सिडीज बेंज है तो बीएमडब्ल्यू भी है, अगर बीएमडब्ल्यू है तो ऑडी भी है, अगर ऑडी है तो वोल्वो भी है, पोर्शे भी है, लंबोर्गिनी भी है. बट सबका अपना ब्रांड नेम है. रोल्स रॉयस भी है, टाटा भी है, मारुति भी है. तो सबका अपना ब्रांड नेम होता है, लेकिन आपके ब्रांड नेम का क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, क्या हाउ डज इट डिस्टिंग्विश द फ्रॉम अदर्स, ये थोड़ा आपको अपने प्रोडक्ट के अनुसार प्लान करना पड़ेगा. एंड देन यू हैव टू सब्सिक्वेंटली रजिस्टर इट बिफोर द ट्रेडमार्क अथॉरिटी या कॉपीराइट अथॉरिटी, जो भी है मतलब अपना. सो ओके, एंड करने से पहले है ना, मैं सर आपसे ये कहना चाहूँगा, ये पूछना चाहूँगा कि है ना आप किस टाइप का है ना सजेशंस देना चाहते हैं कि है ना नए यंग स्टार्टअप में. यहाँ में बहुत लोग हैं, आपको यंग स्टार्टअप ओनर हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं और फ्यूचर में कर सकते हैं, तो उनको क्या किस टाइप का आप सजेशन देना चाहते हैं अपने पर्सनल बिहाफ पे एज अ लॉयर, एज अ. देखिए, मेरा सबसे पहला सजेशन है कि अपने आइडिया में भरोसा मत छोड़िए. सबसे पहला, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी स्टार्टअप एक दिन में बड़ा नहीं बनता. आज अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर बना तो उसके पीछे भी 13-14 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल के लॉ की पढ़ाई है, अंडर ग्रेजुएशन है, स्कूलिंग है, सब चीजें, तब जाके आप एक मुकाम पे पहुंचते हो जिंदगी में. तो जो चीज आपके लाइफ का प्रोसेस है वही आपके बिजनेस का प्रोसेस है. आज हम लोग सबको ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो हमने कुछ सोचा है तब ना जाके यहाँ पे रास्ता बना, तब हम लोग जाके यहाँ पहुंचे.
आई एम फ्रॉम पटना। अगर मैं पटना से दिल्ली नहीं आता इतने साल पहले, 20 साल पहले, तो आज मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर बन पाता। आज मैं पॉलिटिक्स में काम कर पाता, सोशल वर्क कर पाता। तो वही सेम चीज आपके बिजनेस में अप्लाई करता है। जो आपके लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं, द सेम चीज अप्लाई टू योर बिजनेस प्रिंसिपल्स। नेवर लूज फेथ, नंबर वन। नेवर लूज ट्रस्ट इन योर आइडिया, नंबर टू। नेवर लूज कॉन्फिडेंस इन योर ओन सेल्फ, नंबर थ्री। नेवर लूज होप इन लाइफ, नंबर फोर। एंड लास्टली, नेवर लूज फेथ इन गॉड। ये 5 चीजें ऐसी है ना, इनको पकड़ के रखिएगा तो जिंदगी में बहुत आगे जाइएगा। सबसे बेसिक चीज है ये। बाकी लॉ, रेगुलेटरी फाइलिंग, आइडिएशन, रजिस्ट्रेशन, ये सब बात की चीजें हैं। अपने ऊपर भरोसा नहीं खोना चाहिए। और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में रिसर्च करिए, उसको अच्छे से तैयार करिए। कस्टमर की क्या नीड है उसको तैयार करिए, उसके अनुसार तैयार करिए। जैसे अब जो इंडिया का मार्केट है वो अमेरिका का मार्केट नहीं हो सकता, जो यूरोप का मार्केट है वो इंडिया का मार्केट नहीं हो सकता, जो महाराष्ट्र का मार्केट है वो बिहार का नहीं हो सकता, जो बिहार का है वो तमिलनाडु का नहीं हो सकता। तो सारे एरियाज के अपने अपने डिफाइंड स्पेसिफिकेशन है। तो केरला का कोस्टल लाइन है वो यूपी का नहीं हो सकता। तो अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली रिसर्च करके उसको मार्केट में तैयार करके, सिमिलरली प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करके, उसकी कमजोरियों को देख करके, खुद के प्रोडक्ट को इवेल्युएट करके, उसको फाइन ट्यून करके, और अपने ऊपर भरोसा रख के, भगवान के ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़िए। मेरा इतना ही एडवाइस है आपको। एंड जब अगर आप लाइफ में नीचे गिरते हैं या आप धक्का खाते हैं, ठोकर खाते हैं, तो दिल मत छोटा करिए अपना। सबके लाइफ में ये फेज आता है। स्टिक बाय इट, छोड़ो मत, पकड़े रहो उसको बस। जिस दिन पकड़ लोगे उस दिन आगे बढ़ जाओगे। दैट्स ऑल। ठीक है रोहित, एनीथिंग एल्स? या नथिंग, सबका क्वेश्चन ले लिया गया। एंड थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ अस। Thank you, Rohit. It was a pleasure to speak to all of you. I hope I was able to clarify some doubts या जो भी questions थे। मैंने अपने तरफ से एक सिंसियर कोशिश की। एंड वी शुड कीप ऑन डूइंग these sessions again and again, on and off. अच्छा रहता है, इससे इंटरेक्शन होता है और सबको एक बातचीत होती है। ऐसे भी तो कोरोना में हम लोग घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं यार। कम से कम इसी बहाने सबसे इंटरेक्शन होता रहेगा तो अच्छा रहेगा। इट विल बी गुड। ठीक है। एक्चुअली बहुत लोग को अगर आपके कुछ फ्रेंड्स ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, जो इस सेशन में बहुत लोग के ऐसे कोई कुछ फ्रेंड्स है जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ लाइक हम लोगों का जो है ना मेल बहुत लास्ट में गया। एक्चुअली हमारा है ना मेल का डिफॉल्ट सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम था, दैट्स वाई है ना सारा मेल कैंसिल हो जा रहा था। सो नहीं, इसीलिए मैंने इसको शेयर किया अपने फेसबुक और अपने ऑफिस पेज पे, बिकॉज उससे बहुत लोग देखना चाह रहे थे। तो दैट्स व्हाई दे हैड टोल्ड मी। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था। या और इस पूरे वीडियो को मैं कोशिश करूंगा कि इट इज ऑन रिकॉर्डिंग, वी विल शेयर क्लिप्स ऑन आवर सोशल मीडिया, तो आप सब देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। और मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा, कल आप 3 बजे आपका शशांक कुमार के साथ है। शशांक कुमार सर इज अ फाउंडर ऑफ देहात। ओके, सो आप उनसे बिजनेस मॉडल पे वो बताएंगे। So basically आप वो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। We will share the link on our social media. Okay? Thank you, sir. Okay, thank you everyone. Thank you for hearing my boring points. It was a pleasure to speak to you. I know मैंने आपको बहुत पका दिया है, लेकिन फिर भी thank you so much for taking out time and hearing me out. Thank you very much. Thank you Rohit. Thank you team Maitri. Thank you very much. Thank you.